एक सोच के करना, मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटी और सुबह जाके उठ के और उसी मैगजीन के कवर पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हां, मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हां, मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Hello and good afternoon, everyone, and thank you so much for joining us on this webinar called Business Opportunity Over Chai. Business Opportunity Over Chai is a webinar series presented by the management of Franchise India every day at 12 o'clock in the afternoon with an aim to introduce you to a new business opportunity. Today, we have a brand from retail called Amartex Retail Private Limited. Amartex Family Mart is a retail chain that offers a broad range of product, including apparel, home furnishing, and daily household goods. It targets middle-class families, providing affordable quality products across various categories. The company operates in northern part of India, combining a value for money proposition with a family-oriented shopping experience. To talk more about this brand and the business opportunity, today we have Gaurav Arora, who will be representing the brand. He's the VP Sales Franchise India. We will also be joining with Ashok Kumar as the Group Consultant Franchise India. And we also have Amit Gugnani, the channel partner from Delhi NCR, as the retail business expert. So before we start, I would request Gaurav to please take the lead and let's start the brand presentation. But also, at the same point of time, before we start the brand presentation, I would request all the viewers that you all will have the opportunity to ask the questions related to the brand and the business opportunity. I would request you all to please put it in the Q&A box so that we can come back to you with the answers post the presentation. Now, I would request Gaurav to please take the lead and set the context of this webinar. Hi, thank you, Bharat, for giving this platform to all the viewers today to join us on the Business Opportunity Over Chai webinar series. And I thank all the viewers today who have joined in this lovely afternoon during the festivity season to learn about the opportunity that we are going to present today. So as Bharat said, today the brand that we are going to present is basically not a new brand in the market. It's a pretty old brand. They have got an existence of almost 3 decades now in the industry. They have been into textile industry since 1988. And Mr. Arun Grover, who is the founder chairman of this group, Amartex, he hails from Panchkula, and he has got ample of experience in setting up not just textile as a industry, but he's been himself involved in all the line of operations in the textile, right from the manufacturing of clothes to dyeing to weaving and making it as a complete garment.
and not just limiting to only one segment. They have got men's, they have got women, they have got kids, and then they have got footwear, and they have got various other SKUs under the umbrella of Amartex. And the best part is that they are not making for themselves, they are also making for a lot of other companies into the garment and a textile space as an OEM. So they have been instrumental in setting up textile as a category in North India from the head office in Panchkula where they operate, and the place where they have first started their Amartex as a retail opportunity for their audience in the local community. And today, after having worked in this industry for over 3 decades, he has created a benchmark in the market, and they have become an aspiration in the up north market. So today, the brand operates in over 20 locations across Tri-City, which is Panchkula, Mohali, and Chandigarh. Besides, they have got a lot of presence in the Himachal and the Jammu and Kashmir belt. So we've been working with them from some time now, but now it is the time again. We have to ramp up their operations, and we're looking at very aggressively to set up their business operations ranging from Delhi to up north. So now the brand company has got their own office in Gurgaon, very close to Huda City Center metro station, where we can arrange a meeting for you in a one-on-one basis with their teams, so that you learn more about what the brand is about and the opportunity is about and the pedigree that they come from, and also you learn from their own experience that how minutely they understand this business. Because see, I'll tell you the simple formula that we follow, right, or we should refer to in retail is all about the shelf space per square feet efficiency, per square feet utilization of your space that you own today, right? So a lot of people these days come to us seeking an opportunity where they want to deploy their resources, and the first and foremost resource that they possess is a real estate, because today the real estate development has actually triggered in last 1 decade. If you see, a lot of supermarkets, high streets, and the malls and the neighborhood markets have actually come up where people have invested. But now the fortunate unfortunate reason is that the occupancy in these real estate is not to the level of the maximum optimization, and hence people who are falling in this category where they want to use their resources, they want to use their asset in something meaningful, and to create a recurring income for them. This is the opportunity for you, my dear friends. Setting up a retail shop, setting up a family mart, I would say. And just to quote you, we all have seen an example of D-Mart and the Big Bazaar of the world, where the customer goes not just for shopping of one particular commodity of their interest, but it's a complete family mart. So right from pin to plane, whatever you wish to buy for your consumption, be it your apparels and groceries and food and maybe a cosmetic or anything to do with your lifestyle, आप सब कुछ एक ही अम्ब्रेला के अंदर, एक ही रूफ के अंदर आप खरीद सकते हो. सो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपकी शेल्फ स्पेस को यूटिलाइज करने की और उसकी बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन की, उसका एक ही फॉर्मूला है कि आपके पास एक पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए. आपके पास हर चीज वो होनी चाहिए जो आपके बचपन से लेके बड़े तक, right from a child of maybe 6 months old or maybe a infant and to a senior citizen of 70-80 years old, इन सब की जो डे टू डे कंजम्पशंस है, उन सबको अगर आप एड्रेस कर सकते हो किसी भी एक नेबरहुड मार्केट में, तो रिटेल से अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है. क्योंकि यहाँ पे आपको वो हर एज ग्रुप का कस्टमर मिलेगा जो आपकी जो कमोडिटी है, जो आपका SKU है, जो आपके लिस्ट ऑफ ऑफरिंग्स हैं, वो बेसिकली यूज कर पाएंगे, लोग उसको बाय कर पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विद द ब्रांड प्रेजेंटेशन, फॉर विच आई रिक्वेस्ट भरत टू शेयर ए स्क्रीन विद यू ऑल सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. मैं आपको एक ब्रॉड लाइन समझाना चाहता हूं यहाँ पे कि फ्रेंचाइज इंडिया का आपके लिए क्या रोल रहेगा, और आपको ये बिजनेस शुरू करने से पहले या कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले कौन से 4 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने चाहिए, सो दैट you actually reach a right brand, you reach a right category, you reach a right opportunity. So the first question that you should ask yourself is that which business you want to do and why do you want to do. क्योंकि आप आज कोई भी बिजनेस अंडर द सन अगर आप एस्पायर कर रहे हो, be it a education business or automobile business or a retail or a FMCG or a food or a facility management, setting up a dark store, anything that you think that you are
capable of doing, you should ask yourself this question, that why you want to do that business, and whom do you want to set up this business for? Is it for yourself, or is it for somebody in your family, your friends? You want to do it in partnership, और क्यों करना चाहते हो, उसके ऊपर थोड़ी सी आप एक अंडरस्टैंडिंग अपनी खुद की डेवलप करो. इट शुड नॉट बी जस्ट अ शेयर इफेक्ट और अ फोमो और मे बी अ हर्ड मेंटालिटी दैट यू हैव gained by seeing people or hearing from the people about their success story, because no two people can think alike and hence no two people can act alike. तो इसीलिए सेम बिजनेस चूज करना क्योंकि वो सामने वाले ने किया है या मेरे सामने मैंने देखा है एक सक्सेस स्टोरी बिल्ड होते हुए, इसलिए मैं उसमें जंप करना चाहता हूं, आई वांट टू डू दैट बिजनेस, वो कभी नहीं होना चाहिए. आस्क योरसेल्फ कि मैं क्यों करना चाहता हूं वो बिजनेस, और अगर आपको उसका रीजन मिलता है कि आप उसमें एक वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो, आप उसके अंदर एक स्केलेबिलिटी ला सकते हो, और आपके पास बेसिकली उसका एक नॉलेज बैंक है, या आप उस बिजनेस के लिए पर्सनली बहुत कीन हो, तो ही आप उस बिजनेस में जाओ, अदरवाइज उस बिजनेस में मत जाओ. तो ये स्ट्रेटेजिकली आपको सोचना पड़ेगा. दूसरा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप वो बिजनेस कब शुरू करना चाहते हो, कितना जल्दी आप उसमें शुरू कर सकते हो, और आपका अपना उसके अंदर एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान क्या है. Because for every business or every work that you do, there has to be some short term and a long term planning. I mean, we have been seeing this right from our childhood. When we get into a school, when we get into a college, when we get into a job, there has to be an objectivity every time you do something, you plan something, you execute something. तो अगर ये आपने ढंग से इसके ऊपर डेलिबरेट नहीं किया कि आप इवेंचुअली कहाँ लैंड करना चाहते हो, तो आपकी ये सारी जो जर्नी है ना, ये खराब हो जाएगी. So these are very, very important questions, and this is all about mind space that you possess. तो ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो, so that you are clear strategically that why you want to do this business, when do you want to do this business, right, and whom you want to do this business for. Then the second question you should ask yourself is, what best ऑपरेशनल कैपेबिलिटी यू कैन बिल्ड इन दिस बिजनेस. क्योंकि अगर वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आप में नहीं है ना, तो आप ये बिजनेस में आज नहीं तो कल फेल कर जाओगे. अगर आप उतना टाइम नहीं कर सकते हो, तो आप उस बिजनेस में फेल कर जाओगे. अगर आपको लगता है कि वहां पे वो लोकल वेंडर्स नहीं मिल पाएंगे जो आपको उस बिजनेस के लिए चाहिए, तो आप शायद फेल कर जाओगे. अगर आपको लगता है कि वहां पे वो राइट टैलेंट नहीं आ पाएगा, तो आप उस बिजनेस में फेल कर जाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी मिक्स, राइट, बिकॉज पीपल who come in that market, जो आपके बिजनेस को नर्चर करने में आपको हेल्प करेंगे, आपके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में आपको सपोर्ट करेंगे, अगर वो लोग वहां पे नहीं है और आप खुद से वो बिजनेस में कैपेबिलिटी नहीं बिल्ड कर सकते हो, तो ऑपरेशनली आप वो बिजनेस में फेल कर जाओगे, और वो बिजनेस जो है, जो शायद किसी और दूसरे के लिए एक सक्सेस स्टोरी था, आपके लिए शायद एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी बन जाएगा. सो थिंक वाइज that what operational capability value creation that you can do in this business. Third question is, which market are you choosing to do that business? Because the law of demand and supply is the first and foremost aspect when you choose a business in a particular market. दूसरा, लाइसेंसेस आपको जो उस बिजनेस के लिए उस लोकल मार्केट में चाहिए. तीसरा, जो जगह आप चूज कर रहे हो, is that sufficient enough to set up that business? Today we are talking about Amartex as an opportunity where we need a size, a space of about 4,000 odd square feet or more to set up a family mart where you have all the categories available for your customers and your consumers. तो अगर आपकी जगह 500 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट है, 1500 स्क्वायर फीट है, तो शायद आप इस बिजनेस के लिए सूटेबल ही नहीं हो, क्योंकि जिस मार्केट में या जो प्रॉपर्टी आप यूज करना चाहते हो उसमें वो सेट ही नहीं बैठ रहा है बिजनेस. या फिर अगर वो प्रॉपर्टी आपकी सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है, तो शायद रिटेल के लिए वो बिजनेस सूटेबल ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी सूटेबल नहीं है, वो मार्केट सूटेबल नहीं है, क्योंकि कोई कस्टमर सेकंड फ्लोर पे नहीं आएगा. बिकॉज इफ दे कम, दे क्लाइंब अप, इट्स वेरी वेरी इजी. बट जब उनको सामान लेके नीचे आना पड़ेगा, और वो सामान उनके घर का पूरा राशन है, ग्रोसरी है, फूड है, या फिर अपैरल्स है, या फिर, तो वो वेट वो कैरी करके नीचे कैसे लाएंगे. और अगर सिर्फ आप एस्केलेटर एलिवेटर पे डिपेंडेंट रहोगे, तो आपकी क्राउड लिमिटेड है, और आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी. सो इट्स ऑलवेज वेरी वेरी क्रूशियल दैट यू चूज द राइट मार्केट टू डू अ बिजनेस दैट यू आर एमिंग फॉर. And the last but not the least is the kind of investment you want to do in business, the kind of ROI that you're expecting, and how soon you think that you'll be able to bring the operational profitability in that business, and then subsequently the capital break even that you need. तो आपकी अगर अपनी कोई aim है, you want to reach somewhere, you want to have a
corpus in your account in 3 years, maybe 4 years, maybe 10 years down the line, तो क्या वो बिजनेस आपको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर yes, तो आपके लिए वो बिजनेस बहुत अच्छा है. So I summarize all these 4 points that I'm asking you to ask yourself, or you can ask Franchise India team. Our experts are going to guide you to choose a right business, to choose a right category according to the resources that you have, according to the mind space that you have, and obviously the kind of future that you foresee with that business. Strategy, operations, market and finance. ये 4 एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप बिजनेस चूज करते हो. Now let's start with Amartex as an opportunity. So as I said, Amartex is today not just a name, but it's a brand in itself, which was started by Mr. Arun Grover way back 1988, and today it's the brand is recognized as a pedigree of the Grover family in the up north market, because they have actually sustained over 3 decades in the market with a consistent performance in the market, and not just limiting to one age group or one category. They have everything under their umbrella, right from an apparel to grocery to cosmetics and your entire family needs. So ये एक लीडर की कहानी है. और मैं ये पॉइंट बताना भूल गया कि जब आप एक बिजनेस चूज करते हो तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप बिजनेस चूज कर रहे हो तो आप उसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर मेनली बिजनेस कर रहे हो या आप उसकी विजनरी के ऊपर भी बिजनेस चूज कर रहे हो. बिकॉज एट टाइम्स business may be new in a particular market or in a category, but the person who's behind the business has got a decent vision and they have achieved something in their life. So you bank upon that person with the vision that they possess. So यहाँ पे Arun Grover has earned that respect over the has earned that respect over the years that he has spent in the market, and he has delivered in the market. And today this company is doing a business worth 500 crores year on year with their factories and their retail shops that they own, और zero debt company है आज की डेट में, and asset terms में they have got asset worth of 500 crores, and you can Google them. It's not that I'm only talking about this numbers for the sake of you. It is there. You can Google, you can learn about the company, you can learn about the visionary and the accolades and the achievements that they have in their favor in last 3 decades that they've achieved. Talking about the vision and the principles of the company, they want to be the next brand to aspire for in the retail category. आज हम सब अगर अपनी एक जर्नी देखें पिछले 20 साल की, तो हमने बिग बाजार से ये रिटेल फॉर्मेट का जो है ऑर्गेनाइज मॉडर्न रिटेल की जो हम बात करते हैं, वहां से हमने जर्नी देखी, और आज डी मार्ट जो है वो सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का. एंड मिस्टर दमानी होल्ड्स अ वेरी वेरी हाई रिगार्ड्स इन द मार्केट, not just from the business perspective, integrity perspective, but also from the principles and the valuation of the company. और आज Amartex उसी लाइन को फॉलो करते हुए they are going to create a journey for their brand along with people like you who will be joining them in this journey. So that's the vision that they possess, and for that they have got very sound principles in their company, not just in the management, but it's top to down. So if you talk to any of their team members, you will hear the same voice that they focus on the customer satisfaction. They meet with every customer. They do a random check. They follow up with their customers. They give them a random call, check with them about their experience of having visited the store, about the quality of the product, and whatever feedback that they get, they improvise with that. So the value is that they generate the lead, they qualify the lead, they focus on the lead, they meet with the lead, and they satisfy the every possible satisfaction that the customer comes to their mind, to their store. तो ये बहुत important है कि इन जो profound values है, जो deep values है, जो integrity है, ये maintain करना. Because जब आप एक growth story को follow करते हो, तो हमने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जिसमें हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब कंपनी ग्रो करती है तो वो अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लूज करती है. बट यहाँ पे वो एक्सपीरियंस पिछले 30 साल का आज भी कंटिन्यू हो रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि वो टॉप टू डाउन एक ही वैल्यूज को फॉलो किया जाता है, एंड इट इज इंड्यूस्ड इन एवरी एम्प्लॉय
during the joining, during the induction process of the employee joining the company, which is driven by Mr. Arun Grover. Next slide. So, as we were discussing about modern retail, yes, it's a new gold mine. We all have seen the transition of the kirana stores to setting up a modern store in every neighborhood. और आज हम खुद भी वहां पे जाने में हेजिटेट करते हैं. अगर हम कुछ, if you want to buy something, we always prefer to buy something which is packed, which is hygienic, and which we can see with our eyes, with our naked eyes. It's not that we are giving an order and somebody going उसके गोडाउन में जा रहा है और वहां पे पेस्टिसाइड्स है या पैरासाइड्स है या वहां पे रैट्स है या कुछ भी इस तरीके का जो है ना क्रीप्स एंड ट्रॉलीज है जो हमारे फूड को हार्म करते हैं, जो हमारे फूड को अनहाइजीनिक बनाते हैं. तो इसीलिए ये ट्रांजिशन जो है जिसमें आप शेल्फ स्पेस के थ्रू डायरेक्टली प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो एंड इट इज कमिंग इन अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड वे. तो ये आज की डेट में ट्रांजिशन हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और आज इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमने किया है. वी हैव डीप डाउन, वी हैव एक्चुअली dived into this mathematics for you to understand the basic statistics about this industry. आज एक छोटी से छोटी फैमिली का ना मंथली हाउस स्पेंड ऑन द ग्रोसरीज राइट इज अबाउट 10,000 रुपीज अ मंथ. और अगर आज हमारे इर्द गिर्द में, अगर हमारे सोसाइटी में 3,000 फैमिलीज रहती हैं तो ये मंथली कितना हो गया? 3 करोड़ का हो गया. अगर हम वहां पे अमरटेक्स सेटअप करते हैं और 10% का भी हम वहां पे पाए अपने फेवर में जनरेट करते हैं तो 30 लाख रुपए तो बेसिक सेल है जो हम सिर्फ ग्रोसरी बिजनेस से जनरेट कर सकते हैं. बट एज आई सेड, दे डू नॉट लिमिट देमसेल्फ ओनली FMCG as a modern retail opportunity for you or for the consumer. They also have other categories, non-food category, जिसमें इनका टेक्सटाइल है, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स है, कॉस्मेटिक्स है, फुटवेयर है, उसके अलावा आपके होम यूटेंसिल्स हैं, कुकवेयर है, सब कुछ है अंडर वन रूफ. तो ये आपको 30 लाख रुपए यहां से मिलता है और 30 लाख 40 लाख ही अगर आपको यहां से मिलता है तो महीने की 50-60 लाख की आपकी सेल होती है. 50-60 लाख की सेल इज अ वेरी डिसेंट नंबर, क्योंकि साल की देखो तो वो 6 से 8 करोड़ 7 करोड़ की सेल हो जाती है. तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है अमरटेक्स में. और ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है. मतलब देयर इज नो रॉकेट साइंस दैट वी हैव यूज्ड इन दिस स्टैटिस्टिक्स टू कम अप विद. एंड नाउ इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन यू हैव a display of the store, and these are the live stores where you can go and you can buy. तो आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो, so you get in touch with my team. We will definitely align your visit to their store and a meeting in their office so that you can have probably more deeper understanding on the way they function and the way it is going to make a change in your life if you are really interested at setting up a retail business. Now, these are certain dynamics about the Indian grocery market. So, Indian grocery market today is expected to grow about $300 billion in next 3 years. $300 billion का चेंज आने वाला है. और जितने भी ये किराना स्टोर्स हैं ये आज की डेट में या तो डार्क स्टोर में कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर ये मॉडर्न रिटेल में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस ऑलरेडी है तो इट्स द टाइम फॉर यू टू रियली लुक इनटू दिस अपॉर्चुनिटी and convert yourself into a modern retail from a normal किराना स्टोर या जनरल ट्रेड जिसको हम बोलते हैं. और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को इजीली ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, राइट फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास टू अ अल्ट्रा HNI, सबको आज की डेट में Okay, I guess Gaurav has got disconnected due to internet. Let's wait for a few seconds. Amish, am I audible? Yeah. Yes, you are audible. All right. So by the time Gaurav joined back,
I would request all the viewers, you please put all your queries related to this brand. In case if you have any, uh, we will uh, we will take all those questions post the brand presentation. But I mean, by the time Gaurav joins back, I mean we have Amit Gugnani, is the uh, our channel partner and also a retail expert. So, what is your, I mean, your experience, or what is your point of view on these kind of categories? In the investor's point of view. Well, thanks, Bharat. Uh, I think this is a great opportunity, and anyone who wants to, who's really keen to start a retail business or is, kind of already owning retail businesses and want to diversify their portfolio, is going to be a great opportunity, and especially because in the kind of space that Amartex is. There is very limited. There are very limited number of brands and very limited number of organizations who specialize in the uh, pin to aeroplane kind of products, and that's where Amartex is stepping in. I mean, we have seen a many successful journey like DMart, Reliance, and many other, similar kind of format. Like they probably have been doing very good. How do you compare, I mean, uh, you know, this brand with other competitors? Well, definitely, if you look at the marketplace, DMart and kind of Reliances of the world have been existing, and they have already captured a substantial market share. And Amartex is sure to capture, because there is still a lot of space in the market. There is still a lot of opportunity in the market where Amartex can step in, and with the kind of expansion that Amartex would look at or is looking at, it can really become a huge success for some of the investors who would want to really kind of open in markets which are really virgin markets as of now, and they are surely going to gain success over there. Yeah, of course. I mean, the kind of I mean, you look at the Indian food and grocery industry, is now expected to grow, like 852 billion by 2025, which is huge. And of course, I Absolutely. mean, like Indian market, Indian consumers are now, upgrading themselves from going to any Kirana store to going these kind of, Absolutely, Bharat. marketplace. Right. So Absolutely. And it's really a change. yeah, and the USP is that you are getting all products under one roof, and which today's consumer, really demands that, rather than going from one store to another and exploring things, stores like these, which give you products, uh, multiple products at multiple price points and multiple categories. Right. That's the way forward. And that too with the quality, right? Yes. Everything is niche, everything is well managed, and of course you get a very good quality with a better price. Yep. So now we have Gaurav. Yep, you continue, Gaurav. Hey, hi. Yeah, hi. So sorry, I lost the connection in Yeah, between. I know. No, no, Uh, it's okay. right. So we were talking about the Indian grocery as a market opportunity for people. So why we are focusing more on the grocery, though we are not limiting to grocery, and grocery as such is not a product that we are making it ourselves. We are actually buying it from the best of the labels. Though Amatex is mainly a textile company where they have a non-food as a main category, which is like a white label for them. But why we are talking about Indian grocery as a market opportunity for people who are looking at setting up this is this because this gives us a little pull as comparison to only setting up a textile. So True. the reason why we have amalgamated this as a opportunity for investors and for the consumers, so that we can create a better footfall under one roof. So we are dedicating our store
into two different segments. One is a food, second is a non-food. So we have seen and talked about the industry dynamics of the Indian grocery. We see a tremendous potential. It is growing year on year basis. And today, with all the Zeptos and the Blinkits of the world coming in, I mean, I have not seen people uh, in the nuclear families, and especially the people who are living in a nuclear family, वो लोग ट्रैवल करते हैं एक किराना स्टोर पे एक एक सामान लेने के लिए. They better go to a supermarket over a weekend and they buy the entire week grocery and non-food products under one roof, क्योंकि वो उनको एक seamless experience देता है एक ही छत के नीचे से सब कुछ एक साथ खरीदने का. Next slide, please. So this is talking about overall the retail market. So as you can see that food and grocery takes the maximum pie in the retail, modern retail category, followed by apparel and accessories, and then you have other categories like a jewelry or consumer durables, appliances, furniture, fixtures, pharmacy, footwears, and then the other categories. So this entire category and subcategory that we are talking about under retail is basically available under one roof from the house of Amartex. और यही इसका सबसे बड़ा ब्यूटी है कि अगर आप इनके साथ कोलैबोरेट करते हो तो आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलता है. This is, we are seeing, I mean, we have already talked about, but this is just a reiteration and reinforcement of the grocery market growth rate that we are witnessing in last 4-5 years. तो ये आपके लिए एक एब्सोल्यूट नंबर्स है और एक एवरेज अगर ग्रोथ पाथ की हम बात करें तो इंडस्ट्री में कोई भी कैटेगरी 3-4-5% से ज्यादा नहीं बढ़ती, बट ये एक ऐसी कैटेगरी है जो 7-8% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है और इसमें इन्फ्लेशन भी उसी टाइम पे सेम टाइम पे बढ़ रहा है. तो ओवरऑल अगर आप देखो तो बिलिंग जो है पर कस्टमर वो बढ़ती चली जा रही है और ये बिलिंग का ही खेल है सारा. दिस बिजनेस, व्हाइल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the financials and the modalities of the business later in the subsequent slides, but overall the crux is that the growth rate in the retail category, especially in the modern retail, and the billing per customer, both are gaining a momentum, which is giving us a strength to look at this as an opportunity. Yes, we all have seen, witnessed, talked numerous times in this webinar and also in past. There is a complete paradigm shift in the consumer basically consuming or buying their households. क्योंकि उनको अब एक experience चाहिए. It's not that they want to buy because they want to buy. It's the experience because of which they buy. And we see a lot of new brands scaling up in this space of retail as a segment. आज आप देखो पिछले 5 साल में, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड एंड आफ्टर द कोविड, बहुत सारे नए जो है वो हम ब्रांड्स को देख रहे हैं जो D2C सेगमेंट में आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट में. और पहले हमने कभी उनका नाम भी नहीं सुना था, राइट. पहले हम लोग ITCs एंड दी कैडबरीज एंड दी नेस्लेज ऑफ द वर्ल्ड को ज्यादा समझते थे, सुनते थे, बट ओवर लास्ट 4-5 years, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड एंड आफ्टर कोविड, देख रहे हैं इतने सारे नए नए ब्रांड्स प्रॉस्पर कर रहे हैं और सब ब्रांड्स को मार्केट स्पेस मिल रहा है. और इसका क्या कारण है कि अब कस्टमर राइट स्मार्ट हो गया है. वो सिर्फ अब ब्रांड के पीछे या लेबल के पीछे नहीं भाग रहा है, वो ये देख रहा है कि मुझे किसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसमें मुझे बेस्ट रेट मिल रहा है, किसमें मुझे बेस्ट पैकेजिंग मिल रही है, किसमें मुझे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं. तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस जो है ना वो लोगों का डिफरेंट हो गया है और यही जो है ये पूरी सेगमेंट को आज के डेट में जो है ना ये ग्रोथ में लेके जा रहा है. ये सारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस इंडस्ट्री के, अगर आप देखो, राइट. क्योंकि एक वाइडर प्रोडक्ट रेंज लोगों को मिल जाती है, अगर वो रिटेल शॉप में घुसते हैं एक बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है और not just they are limiting their interaction in a digital format with the companies, but they are going and seeing it and then buying it. Right? Correct. And then, So I mean, it is like a behavioral changes are in Indian consumers. absolutely, right? absolutely. I mean, also they now have higher disposable income. People now try to enjoy a more diversified lifestyle. Of course, you're absolutely right that people now want the experience as well, right?
अब एक छत के नीचे उनको वाइडर प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स मिल जाते हैं, कन्वीनियंस है चूज करना फ्रॉम दी डिफरेंट ऑप्शंस। तो ये सारी चीजें हैं, नो डाउट कि ये एक कारण है कि लोग इस तरीके के फॉर्मेट में लोग अब जाना पसंद करते हैं। करेक्ट। Absolutely, absolutely. Next slide. So this is what the market positioning we're looking at for Amartex. We are a new DMart in making. We have a legacy of 30 odd years now in the market, and we are growing with almost at a rate of 25% year on year in the absolute terms. Not just the industry, but also as a brand. So overall, my friend, it's a worth an opportunity to explore from a strategy side, from a product mix, from a brand legacy, their ethos, their principles, their values, their experience. सब कुछ अगर आप देखते हो तो ये बहुत फेवरेबल है आज अमरटेक्स के लिए, आपके लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, देयर आर 4 ब्रॉड रीजंस ऑफ यू चूजिंग अ राइट बिजनेस और अ कैटेगरी और अ ब्रांड और अ प्रोडक्ट, और वहां पे ये एज अ अपॉर्चुनिटी अमरटेक्स इस सब में फिट बैठता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ये बिजनेस जो है ये आपको एक फोको अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें फ्रेंचाइजी इज सिंपली एन इन्वेस्टर एंड कंपनी इज गोइंग टू मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशंस। तो अगर हम बात करते हैं कि आज आपको इस बिजनेस में जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है स्ट्रेटेजिकली, कि आपको ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस की, इस अपॉर्चुनिटी की, इस प्रोडक्ट की, इस कमोडिटी की हमारे को एक नीड है हर एक नेबरहुड मार्केट में जहां पे हैबिटेशन है या जो भी एक डेवलपिंग एरिया है, क्योंकि इट इज लाइक अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज दैट वी आर गोइंग टू गेट अगर हम कोई ऐसा सेटअप करते हैं। कम इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस में जा सकते हो। ऑपरेशंस जो है वो सारे कंपनी के हैं, सो बीट हायरिंग, बीट ट्रेनिंग, बीट मार्केटिंग, बीट स्टाफ वेलफेयर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्ट एज अ एज अ कैटेगरी, उसका रिप्लेनिशमेंट, ये सब कुछ ब्रांड देख रहा है। आप सिर्फ इस बिजनेस में एक बार ही पैसा डालते हो, आपकी जगह अपनी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपको अपने एंड पे करना है। कंपनी की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है कि 1,000 रुपए के आसपास पर स्क्वायर फीट का खर्चा आता है इस पूरे मॉडल में। आपका सेटअप करने के लिए 4,000 रुपए मिनिमम आपको स्क्वायर फीट जो है वो आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है फॉर द फिट आउट, और आप इस बिजनेस में जो है वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मोटा मोटा 40 लाख रुपए के आसपास का आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है। 8 लाख रुपए प्लस जीएसटी फ्रेंचाइज फीस है, और ओवरऑल जो है ऑपरेशंस कंपनी अपने हाथ में ले लेती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू हैव गॉट अ ईयर ऑन ईयर विजिबिलिटी इन दिस ईयर इन दिस बिजनेस फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, क्योंकि टर्म ऑफ द अग्रीमेंट दैट यू आर गोइंग टू साइन विद द कंपनी इज फॉर 20 ईयर्स। टर्म शीट आप जो साइन कर रहे हो, विच मीन्स एक बार ही आपने इन्वेस्ट किया और अगले 20 साल तक आपको ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ आपको इसमें ग्रोथ भी मिल रही है और एक रेकरिंग इनकम भी मिल रही है। तो आपने एक बार ही अपनी प्रॉपर्टी ली, आज आप आपने प्रॉपर्टी को डिप्लॉय कर दिया कैपिटल डाल के, एंड देन you can have a visibility, you can have a continuity, you can have a growth, you can have a consistency in this business where you're not operating it directly. You are simply using your resources to grow your income and to have a steady income rather. तो आज आप जैसे म्यूचुअल फंड्स देखते हो या स्टॉक मार्केट देखते हो, आप उसमें एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्ट करते हो और एक सर्टेन टाइम के बाद आपको 15, 18, 20% का रिटर्न उसके अंदर मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपने इनिशियली कैपिटल डाला है, उसके बाद आपकी एक रिकरिंग इनकम, एक स्टेडी इनकम शुरू हो जाती है, एंड विच हैज गॉट अ ग्रोथ स्टोरी। क्योंकि कोई भी कस्टमर आज की डेट में अगर वो 10 रुपए का सामान खरीद रहा है तो वो कल 12 का खरीदेगा, बाय द वर्च्यू ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑब्वियसली द कंजम्पशन दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। और दूसरी चीज, वहां पे नई आपकी कस्टमर एक्विजिशन भी तो साथ में होती रहेगी। सो इट्स लाइक यू सेटिंग अप बिजनेस जिसमें नया कस्टमर एक्विजिशन हो रहा है, बाय द वर्च्यू ऑफ इन्फ्लेशन वो कस्टमर जो रिपीट बाइंग कर रहा है उसका पर बिलिंग बढ़ता चला जा रहा है मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, और नए कस्टमर्स आते चले जा रहे हैं। सो बिजनेस का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है एज अ पॉसिबिलिटी, और 20 साल तक, राइट। इसके अंदर आपको जो बेसिकली कंपनी से मिलता है which is 4% on the food and 8% on the non-food। मतलब अगर कंपनी का, जैसे हमने आपके साथ बात किया था, 30 लाख रुपीस अगर कंपनी का एक्सपेक्टेशन है फूड से,
और 20, 30, 40 लाख रुपीस का है नॉन फूड से, तो ये 50 लाख रुपए में आपको 4% और 8% रेस्पेक्टिवली जो है वो रेवेन्यू शेयर मिल रहा है. Am I clear? And if not, then you have the chat box in front of you. Use that chat box to share your questions with us so that we can give you the relevant answers. And you can also leave your contact number and the area of your interest and the size of the property that you possess so that our team can get in touch with you for the initial survey of your property. And after we give you the conditional approval, we can align your meeting with the brand team and we can take you through the overall experience of having learning from a brand itself, and then we can perhaps get into the further modalities of you becoming a franchise partner. The ideal profile that we are looking at is somebody who owns the property, who has the interest in this particular business as a category. If you have investment and not the property, still you can become a partner because we can look at maybe property as a rental. But yes, the rental will be a part of your uh, expense even after you set up, but it will come from the revenue that you are going to earn in this business. So overall, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, इंटरेस्ट है, so this is a perfect opportunity for you where you are not going to be operating at your level. आपको ऑपरेशंस में कोई दिमाग नहीं लगाना, कंपनी खुद से ही सारा बिजनेस कर रही है. और अभी हमने इसका रोल आउट जो है वो ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है, विच इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. वी आर लुकिंग एट ट्राई सिटी, वी आर लुकिंग एट हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली as a primary markets for us, and any part in the NCR which is falling under Haryana and UP as a market. तो वो हम जो है वो अपने लिए इमीडिएट रोल आउट प्लान में जो है टारगेट कर रहे हैं. और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास आज लोकल प्रेजेंस है, हमारे पास अपने डिपोज है, हमारे पास आज बाइंग पावर है, और जिसकी वजह से हम बेस्ट रेट्स पे फार्मेसी, नॉन फार्मेसी, फूड, नॉन फूड सबको बाय कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को बेस्ट रेट पे दे सकते हैं जो कंपटीशन में आसपास कोई नहीं दे पाएगा. और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो ओवर द इयर्स हमने अचीव किया है. सो द मेरिट इज वी आर गोइंग टू गिव everything under one roof at a discounted price so that we have a repeat customers and there is a new customer acquisition happening at the same time. Amit, you want to add anything here? No, I think Yeah, thanks so much, Gaurav. Yeah. Amit, please go ahead. yeah. I think Gaurav, you've been a great you've been able to explain the concept very, very rationally, and you've been able to put across the point, which is Mr. Grover's vision as well. And I think it's a great opportunity, and for a detailed discussion, I would kind of urge all the investors who would want to participate in this discussion. We should have a one-on-one meeting, and we can discuss in more detail and the modalities of how the business can be taken forward. Yeah, of course. And it's been Well said. it's been a great session, Gaurav. Thank you. Right. So of course, so viewers, in case if you would like to get in touch with us to discuss about the brand and the business opportunity on one-on-one basis, I already have shared the contact details in the Q&A box. It is 9717683838, or you can also write to us with the feedback at franchiseindia.in. Don't forget that these webinars are done for you. We want you to learn about the brand, discover the business opportunity, and take an informed decision. Right. So I would now like to thank Gaurav Arora for presenting the brand and, of course, taking us through with all the aspects of this business. And also, I would appreciate Mr. Amit Gognani for being available for this webinar as the retail expert. Of course, you all can get in touch with us, and we will help you buy this business at the best convenience. So that's it for the day, I guess. Thank you so much, everyone, for joining us. And tomorrow at 12 o'clock in the afternoon, we will again come up with a new brand and the business opportunity. Till then, take care and have a nice day ahead.